Hello everyone, welcome to Mindface, the only college community. So first we have to type Mumbai University and then scroll down, go to Samarth wala website. You go there and check wherein new registration option मिलेगा आपको और login का मिलेगा. New registration पे click करो. Then you have to fill very basic details like Mindfaces. This is a sample form for your understanding. Your date of birth properly, year in which you're born, so 2007, right? Then go down and put your email id. Make sure the email id you are inserting is professional and official. Okay, then you will get an OTP, two OTPs, SMS and email पे डाल दो, कैप्चा डाल दो. उसके बाद you have to submit the OTP. ठीक है, ऐसा prompt आ जाएगा. फिर you will be directed to login. आपको देखना है इफ़ यू आर डन एंड सेटल्ड विद एवरीथिंग देन लॉग इन विद द डिटेल्स. आपका ईमेल आईडी जो आपने डाला था वो यहाँ पे आ गया, पासवर्ड जो डाला था वो आ गया. अभी कैप्चा डाल दो. कैप्चा डाल दिया, करेक्ट 172512. देन लॉग इन. वंस यू लॉग इन, दिस इज़ द विंडो दैट कम्स. वेलकम माइंड फेसेस जो भी आया. नोट डाउन योर रजिस्ट्रेशन नंबर फ्रॉम योर. ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर प्रोसेस. देन कंप्लीट योर प्रोफाइल पे जाओ. वहाँ पे जाके लेट्स वेट फॉर बफर. या द डिटेल्स यू हैव टू फिल. नेम इन मराठी, खाली आपको इंग्लिश में लिखना है तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर यू गो डाउन एंड सेलेक्ट योर कास्ट, जनरल, OBC एक्सेट्रा. जनरल इन आवर केस, मेल फीमेल मेल. क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन HSC बोर्ड बराबर. तो माइंड फेसेस हमने ऐसे टाइम पास मतलब डमी डिटेल्स डाली है. उसके बाद सिलेक्ट योर मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, एज एंड ऑल ऑफ दैट. वी कैन नॉट शो यू, दैट्स व्हाई इट इज़ हिडन ओवर हियर. Then go to religion, whatever it is. You go Hindu, Islam, Sikh, whatever. Then village, town, Mumbai, if you're staying in Mumbai or any outstation, then outstation. Country, India, or NRI, then NRI, any country. State, Maharashtra, if you are in Maharashtra student. If you are outside, then OMS, of course, any other state. Select city, Mumbai. If you live in suburbs, then Mumbai suburban. And if you live in Navi, then Navi Mumbai. Mother's name आपको डालना होगा. अभी we're just putting temporary. ओके, यहाँ पे भी कुछ भी डाल देते नंबर. सो यस, देन गो डाउन. देवनागरी मराठी सेम आपको लिखना है और कुछ नहीं. फादर्स नेम यस, इनिशियल डालोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर सेव करो, ओके करो. ये हो गया. फिर आपका एड्रेस पूछेगा, परमानेंट एंड करेस्पॉन्डेंस, वो डाल दिया. फिर सेव एंड नेक्स्ट, ये आ गया. उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट. देन आपको इलनेस है कोई भी नहीं है, सो सिलेक्ट नो. NCC है, नो, सो नो. Then NSS, no, then no. Then are you university employee, ka beta beti, no. Then you have to select it accordingly to the options, no, to no. फिर we go down and they belong to urban, rural, semi-rural, select accordingly urban. Then language, like what language you speak, reading, writing, speaking, etc. So जो भी आपका बराबर होता है उस पर आप टिक कर दो. हिंदी हमारे केस में एप्लीकेबल है तीनों, सो तीनों टिक किया. मराठी में रीडिंग थोड़ा बहुत कर लेता है, सो रीडिंग पे क्लिक किया. एंड देन गो डाउन एंड टॉक अबाउट इंग्लिश गैस एवरीवन कैन बी familiar, so reading, writing, speaking. Okay, done. Other language कोई आती है, so just insert that in the column over here. And nothing much but save and next. Once you're done, you will be directed to the entire portal to check whether everything you have filled is proper or not. ठीक है, ये सब हो गया. एक बार चेक करो. अभी प्रोसीड पे दबाओ, क्लिक टू नेक्स्ट. एंड देन यू हैव टू अपलोड योर फोटोग्राफ सिग्नेचर. 10 KB से ज़्यादा होना चाहिए तो ये आप अपलोड कर पाओगे. ठीक है, do that and then cross verify all the details whether it is proper or not. Then submit and lock. Please check it properly. Thank you.